हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो आप सबका प्लान है टू मूव अब्रॉड फॉर हायर स्टडी और आप में से कई जो ये वीडियो देख रहे हैं दे आर ऑलरेडी इन अब्रॉड और आपको वहाँ पर पहुँचे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई बच्चों का अभी इतनी जल्दी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता अबाउट हाउ टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस। ये वीडियो शेयर करेगा आपके साथ 10 मनी सेविंग टिप्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। यू वुड बी एबल टू मैनेज योर एक्सपेंसेस इन अ बेटर एंड मोर इफेक्टिव वे। अब एक एक करके ये सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि ये जो टिप्स हैं वो कितने practically applicable हैं। So, how to save money while studying abroad? This is a question almost every student asks, and stress is over when they study abroad. Sometimes students are so invested in getting themselves enrolled into their dream universities abroad and worrying about the tuition fees that they forget that they still need a considerable amount of capital to survive. From accommodation to traveling and daily meals to entertainment, everything is going to cost you money. Therefore, it is really important that you strive to keep your education abroad as cheap and as cost effective as possible. You can always take up part-time jobs, but what if you are unable to? If you do your research, there are always some easy study abroad tips to save money with or without a part-time job. To help you save money while you study abroad, here are some quick money saving tips. आइए सबसे पहला देखते हैं वो क्या है, and that is make a budget. ये हर किसी के लिए, हर एज के पर्सन के लिए एंड नो मैटर वो कहाँ पर रह रहा है, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बजट बनाएं। एंड यहाँ पर हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आई विल टेल यू। When you go abroad for your education, exploring food, accommodation, traveling, etc., takes up a lot of money from your savings. The saved amount seems like a lot, and hence, most of you don't think twice before spending on little expenses. And that's where many students make a grave mistakes. They don't budget their food, accommodation, travels, and tours the way they should, and as a result, they end up spending money that is supposed to be saved. Making a budget helps you twofolds: get more organized and save a sizable amount of money. I suggest that your account for the very basic things like your rent, food, travel, expenses, etc., and make a budget list. Also, make sure that you don't utilize all of your budget and that you keep a little buffer. For instance, if you are expecting to spend approximately 5,000 a month, then tell yourself that you only have 3,000 a month. Save the remaining 2,000 and keep it for emergencies और फॉर फ्यूचर फन एक्सपीरियंसेस। अभी आपके साथ मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पहुँचा, मेरे नोन्स में से कोई मुझे वहाँ पर लेने आया। जैसे वो अपनी एक लग्जूरियस सा लाइफस्टाइल था उनका, आई फेल्ट लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ। जैसे वो स्पेंड करते मैं भी स्पेंड करता गया। एक मंथ मैं उनके साथ रहा एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली $1,100 एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैं सर्कस देखने भी जा रहा था, मूवीज़ देखने भी जा रहा था उनके साथ। एंड लेटर आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे अभी स्टडी करना है और मेरा फोकस सिर्फ बेसिक्स तक ही रहना चाहिए, और जिसकी वजह से लेटर जब मैं मूव किया और मैंने अपना प्रॉपर बजट बनाना शुरू किया, एंड देन माई स्पेंडिंग वॉज हार्डली इन बिटवीन $300 to $400. सो दैट्स वाई बजटिंग इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई मस्ट से ये जो एक्टिविटी अभी आपके साथ हो रही है, इसको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स तक ही कॉन्फाइन मत रखिएगा। इससे आप अपने इंग्लिश लर्निंग भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइंड द न्यू वर्ड्स दैट यू आर फाइंडिंग इंटरेस्टिंग। अपनी वोकैबुलरी के साथ साथ आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फाइंडिंग न्यू सेंटेंस टाइप्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड हैक, दैट इज़ यूज चीप फ़ोन सर्विसेज। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से मोबाइल, एक्सपेंसिव मोबाइल लेके जाने के बारे में सोचते हैं, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशन इज़ दैट आप जिस कंट्री में जाएं
वहीं की सर्विसेज, वहीं का मोबाइल फ़ोन अगर आप लेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, बेटर प्लान्स मिलेंगे, आप अपनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, कैप प्लान्स रहते हैं, यूजेज काफ़ी आप कर पाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज मिल जाते हैं. सो अवॉइड टेकिंग अ फ़ोन from here, but still you can consult with your friends who are already there in the country where you are planning to go. Well, calling locally as well internationally is essential if you are a student studying abroad. Therefore, if you don't pay attention, your phone bill will skyrocket very quickly. While there are apps such as Google Duo, WhatsApp, Skype, etc., for free online calling, these apps require mobile data or Wi-Fi, which may not always be available. Carefully using cheap phone services and choosing the perfect offer is the best option to save money while studying abroad. You will be amazed at how much you save on your phone calls to your home country using services like Riptail, Google Fi, etc. And I'm very sure आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस चीज़ की सर्च करने वाले हैं कि ये Google Fi and Riptail क्या है. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा if you searched it. Now, moving on to the third one, hack 3. Make the most of students discounts. आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे भी नहीं पता होगा, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट हर एक जगह पर डिस्काउंट्स रहते हैं, चाहे वो बसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, एनीथिंग. Student discounts are also one of the answers to how to save money while studying abroad. But for that, you need to be attentive and must carry your student ID all the times. From trains to theaters, your student's card can contribute to saving a lot of your money. Don't hesitate in asking vendors and cashiers if they offer discount for students. You are a student asking for student discount and there is nothing outrageous about it. Another really simple way to get a student discount is to ask your university office or library if they know of any discount offer for various amenities. You never know what you might find. For example, जब मैं वहाँ पर था, एक बार हमारे पंजाबी बहुत मशहूर सिंगर हैं वारिस brothers, they were there. Regular ticket price was $50. However, student concession discount price जो tickets का था वो था $35. That means a massive discount of $15 was just available for the students, and definitely आप भी ये discounts avail कर सकते हैं. Next one is learn how to cook. Learn to cook. This is one of the soundest tips for studying abroad that you can get. Not only does it instill discipline in your lifestyle, but you can also save a lot of money. Truth to be told, ordering food and delivering takeouts is not the solution when you have to work over every meal on your own. By cooking a couple of dishes in large quantity on weekends, you can sort out your dinners for the entire next week in money that may worth only 2 to 3 takeouts. Cooking for yourself also allows you to customize your diet and lead a healthier life. ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत सारे क्यू कार्ड्स में बताई है जहाँ पर स्किल्स की बात होती है. आपको हमेशा ही ये एडवाइस है कि अपनी कुकिंग स्किल्स को प्लीज़ पॉलिश कीजिए. अगर आपको कुक नहीं करना आता, जाने से पहले डेफिनेटली सीख लीजिए. बहुत परेशानी आने वाली है, आपके पसंद का फूड मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा. एंड आउटसाइड फूड कभी भी चीप नहीं रहता, कभी भी हेल्दी नहीं रहता. नेक्स्ट हैक इज़ लर्न हाउ टू गेट प्राइस कट फ्रॉम द लोकल्स. Your local friends and contacts can also come in really helpful in keeping your study abroad cheap. Locals anywhere are aware of the hacks of saving money on products and services in that particular region, where heckling works and where doesn't. A local will guide you better for that. Their tips and tricks will let you save some money on every spending. Once again, I have an example here for you
कि जैसे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोर्स रहते हैं, वूलवर्थ्स रहते हैं, के मार्ट्स, ये वो, वहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिग सिटीज़ में हैं, नो मैटर आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहाँ पर हैं, बिग सिटीज़ में आपको ज़्यादातर चाइना टाउन्स भी मिलेंगे जहाँ पर चाइनीज़ शॉप्स रहती हैं, $2 शॉप्स रहती हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वैसे भी सस्ते होते हैं, आपको पता ही है, और वहाँ पर जाकर आपको और सस्ते लगने लगते हैं। सो दिस इज़ समथिंग you can get to know from the locals. Next one is shop during Black Friday or garage sales. When you first reach your study abroad destination, you might be excited to buy all your necessities together. However, we suggest you hold off on doing that. Buying things like furniture or other knickknacks at flea markets or garage sales instead of regular stores is always cheaper. As for all the other stuff you need for day-to-day living, you can always buy stuff in bulk at stores like Costco or Walmart's. And the best option? Shop at seasonal sales like Black Friday, Boxing Day, Cyber Monday, etc. It's amazingly cheap and you can get crazy deals ड्यूरिंग दीज सेल्स। इससे भी बेटर मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ रेकर शॉप्स, जो पुरानी चीज़ें अपने पास रखते हैं, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस से इनसे मिलती हैं। और जो गोरे लोग होते हैं वैसे भी टाइम टू टाइम अपना जो फर्नीचर या रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। क्रिसमस टाइम के आसपास वो अपनी सारी चीज़ें घर के बाहर निकाल देते हैं। गैराज सेल रहती है या फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको पिक करने देते हैं। सो इनिशियली जब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, ऐसी चीज़ें आपको चाहिए लेकिन आप अफोर्ड नहीं करना चाहते या कर पा रहे, तो एक बार इन्हीं से काम चलाइए, देन बाय द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। Look for free entertainment options is the seventh hack. Every new place you travel to will have some amazing tourist and local spots that are worth checking out. This hack is hands down a rare one on this list of money saving tips for students. Big cities have many free entertainment avenues that many people are not aware of. Search for them and then visit them to splurge in your free time. Museum, parks and culture shows, all those and many other options can offer entertainment free of cost. ये नहीं है कि आप जिस बिग सिटी में चले गए वहाँ के जो मेजर अट्रैक्शंस हैं आपको तभी देखने हैं, बाद में देखिए, लेकिन वहाँ पर एंटरटेनमेंट हर एक जगह पर है, नेचुरल ब्यूटी हर एक जगह पर है। आप बीचेस पे जा सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रीट शोज़ होते हैं, आपकी एंटरटेनमेंट हर जगह पर हो जाएगी। डोंट बी स्पेसिफिक टू वॉचिंग मूवीज़ इन सिनेमास जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं या कुछ भी ऐसा। और नेक्स्ट वन इज़ फाइंड अफोर्डेबल अकोमोडेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वरीज एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैज़। यू हैव टू हैक योर वे इनटू द बेस्ट अकोमोडेशन possible for yourself because that is the biggest expense item outside of your university tuition fee. Living off campus is comparatively cheaper than living on the university campus, provided you find the right one. You can also choose multiple roommates to live with and then reduce your rent accordingly. Prefer to have an accommodation in the outer suburbs where you can find it at a much lower price. Big houses रहते हैं that you can easily share with others and it really helps to share the cost. Hack number 9, make the best use of credit cards. Now, this is a very risky yet useful hack. So make sure you are very careful about implementing this one. Credit cards are a very popular way to save money. While building your credit card history with a bank, every credit card has an allowance or a limit within which you are allowed to spend and then pay the bank afterwards. So here's one of the biggest money saving tip for students. Great credit cards that reward you for using them. These rewards can be in the form of cash or points which can be later used to redeem for really cool offers and save a lot of money. You can also get an airline credit card that lets you collect air miles which you can use to get big discounts on your flight tickets. Well, I personally do not recommend कि जो नए स्टूडेंट्स स्पेशली गए हैं दे गो हेड विद द क्रेडिट कार्ड। वैसे भी हिस्ट्री बनने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आपकी वहाँ पर क्रेडिबिलिटी एक बार ख़राब हो गई देन इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव आउट देयर। सो बेटर क्रेडिट कार्ड अवॉइड करें, क्योंकि कई बार हो जाता है कि इन टाइम आप पेमेंट नहीं कर पाते एंड
That too comes with a lot of penalties. Interest बहुत heavy रह जाता है. But if you have a consistent income, then you can definitely think of a credit card. Finally, travel cheap or on foot. If you are studying in any European university on Schengen visa, then it is very likely that you will make the most of this opportunity and will travel to all the places that you have long marked as your tour destination. So if you don't want to strain your student's budget while fulfilling your wanderlust, make your travel as cheap as possible. Forget convenience and consider prices only. In some places, you will find bus fares lower than trains and vice versa. Assesses all such fares beforehand so you can take the cost-saving decision at the given moment. And when taking a plane for cross-border traveling, book red-eye flights. Also, travel on foot for most of your intercity roaming and commutes. It is good for your health, good for your wallet, and you will also be able to experience things with a new and closer perspective. Well, all I can say is अगर आप वहाँ पर जाकर कार ले लेते हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे. लेकिन सिटी सेंटर में अवॉइड कीजिए कार लेके जाना. पार्किंग बहुत महंगी है. कार्स काफ़ी जगह पर बैन भी रहती हैं. एंड ऑन फुट सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करना ज़्यादा फीजिबल भी रहता है. बट जिसके पास कार है उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं. सो मेक श्योर दैट यू लर्न टू ड्राइव बिफोर you move to these countries, and as soon as you reach there, apply for a driving license and many opportunities would be there for you. So that's pretty much all, my dear friends, and I hope this particular video has really helped you in understanding what kind of costs are involved for a student when they are studying in a different country and what things they can really do to manage their expenses in a better way. Thanks for joining me for this particular video. Take care of yourself.